So last class we finished with login operation. See, yes. So last class we finished with the login operation in this case. So once the let me log in as a student. One record say login as Kiran. Password might be Kiran. Yes. ಈ ಕಿರಣ್ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ he wants to change his password. So password change ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಮೇಶ it should be after you perform the login operation. Okay. So for that ನಂಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು login page I have to create a change password page first in this case. So change password page ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ let me have one more HTML page. So store it inside the templates folder. So template folder naga I'll call the page name as change password dot html and write the code in change password in this change password. Make use of h3 change password and in the center tag use h4 two flower brackets msg. Next, after this, use a form tag name is equal to frm change password method is equal to post. Autocomplete is not required in this. Close and ಈ ಯಾವುದೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್. ನ್ಯೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನು ಬೇಕಾದ ಹೊಸ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಹೊಸ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ನ್ಯೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಆ ಯೂಸರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಾಗ he will remember what he has typed for the new password in this. So ಅದರ ಸಲುವಾಗ you can make use of the font tag use ಮಾಡಿ you can put star color is equal to red and in the bold tag put it as current password. So I need current password, new password, confirm new password. So I'll take three labels, new password, confirm new password. And use the input type is equal to password for all the three. That is input type is equal to password, name is equal to current password, autofocus first field of the so autofocus equal to on. उसके बाद it is compulsory so required use placeholder enter current password. The same way I need to have the new password. So I'll know input type password ಇರ್ತದ name change ಆಗ್ತದ that is enter. Here it will be new password. Autofocus is not required. Required field is important. Enter new password. And after this, the third one that is confirm new password. So in FIRM confirm new password required field. Enter badu it is
retype, retype new password in this. So three input type passwords in this, and then last again input type is equal to submit, submit, submit. Name is equal to btn change password. Value is equal to change password, and use input type is equal to reset. Name is equal to btn reset, and value is equal to cancel. So this is a simple HTML form design. So form design add takshana in the before closing the form tag, compulsory make use of CSRF underscore. Save this. So once you have created a HTML page, you know that you have to create a path for it. So go to urls.py, add a new path. The path name will be change password. So same in the HTML page as well. Okay. So whenever you add a new path in this case, you should go to views.py, and views.py you have to add a function. So I'll add a new function def change password request colon msg is equal to empty return render open close request comma change password dot html comma flower bracket msg colon msg. So now the HTML page should be visible. Sir, this HTML page access ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Do I need to type the URL on here? Not required in this. ನೀವು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬದಲು ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಓಪನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್. ಸೊ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್. ಆ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಲೇಬಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. So in the body tag, I have the get started option here. Okay. So here, what I should do is, it is in the anchor tag I should put this. Now, bari get started and direct hakena. Nange adre one page in the inner page go before I need to use an anchor tag in this. So I'll make use of a href equal to, here I will say change password. And in href naga, don't give the name of the HTML page. Under .html kodabadu. What you should do is, whatever you have given in the urls.py in this place, this double quotation value should be given here in this. To be specific, actually you put the name property. So name property will gain value other, and name property should be given in the href in this case. Okay, save marketing, and I'll refresh the web page, and you can see the change password option is there. Click Martini, it comes to the change password. Obviously, it is not looking good. They will you make use of the chat GPT to improve the design. So I'll take the complete code. Say make use of the chat GPT site. Improve UI using BS5. So he'll make the changes and he'll give us the code. Changes are done. Copy this. Make sure he has kept everything as it is. Okay, CSRF token other MSG hakana change password is there. Bold tagabudtarana yavattigu he removes the bold tag in this. Anyways, leave it, save and refresh the page. So this is how your change password looks. Okay, the outline on use ಮಾಡ್ತಾನವ. For this reason you are getting this. We have to make these changes. The changes now ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು. So I'll change BTN instead of outline. I'll make use of warning, and remove this BTN custom. Even here, remove this BTN custom. Illi fresh we get that. And Vandra Baju one per because of his CSS, he has made use of these things. Okay,
Anyways, not an issue. You can keep the cancel or you can leave it in this case. I can send not send the button carrying out. So I'll keep it as it is. Okay. Now, eager, whatever the current password is there, I'll enter the current password. I'll enter the new password 2 times. Change password and click ಮಾಡಿದ್ರೆ the password should be updated in this. Okay. So when you click on this, it will again go back to the same page, that is use.py naga change password function. So inside this button click ಮೇಲೆ operation ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ if request dot method double equal to post. First fetch all the data in this current password, new password, confirm new password, retrieve ಮಾಡ್ಕೊರಿ. So current password is equal to request dot post dot get open close current password. So you should know what is the name of the tag that you have given there in this case. So same names, copy paste one. So new password, and there also I have given new password. I'll copy paste. Last again, it is confirm new password. Request dot get. ಮೂರು ಡೇಟಾ ಫೆಚ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. The first thing that you should check is new password ಮತ್ತು confirm new password must be same. Okay, ಅದು different ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ it should not accept in this. So for that, what I will do is, if new password is not equal to confirm new password, okay, inside this give a message to the user saying new password and confirm new password must match. So I'll give a message saying new password and confirm new password must match in this case. Okay. Suppose if both new password and confirm new passwords are same, then come to the else part. So else part na bandana confirm new password with the password edu, it is correct in this. But next I have to check is whatever the current password he has typed, a current password correct adana ida check ಮಾಡಬೇಕು. I have to check whether he has entered a correct password or not. So the check ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ very simple. If student registration data dot objects dot filter, inside the filter you login ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ whatever the condition you had given, you have to give the same condition here. So I can just copy paste the code that I have taken here in this with small change. So I can take the same code in this, that is student register data dot objects dot filter, register number is equal to register number. Do I have register number here in the front end? No. But remember, the password has to be compulsory changed with the registration number only. Reason is registration number will never be same, but passwords can be same. ಹೌದಾ? So password same ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, say take an example, Sania has a password 123, Apurva has a password 123. Say Apurva login ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ password 123 ಇದ್ದದ್ದು 456 ಇಡ್ತಾರೆ. ನಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಬರೀ password 123 ಯಾರ್ದದ updated to 456 ಅಂದ್ರೆ, whoever has kept password 123, everybody's password will change. But if I make use of registration number, Apurva's registration number match ಆಗಬೇಕು plus password match ಆಗಬೇಕು. At that time, maybe password with Sania will match, but registration number will be different in this. So hingagi it is compulsory that the password has to be modified using the register number or whichever login code he has written. Login ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಅವನು ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾ, ಆ ಡೇಟಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕು. It can be a mobile number, it can be a registration number, it can be a employee ID, it can be a patient ID, whatever it is, a unique value should be there when you are making the change in this. But point is, sir, we are not taking username here, register number here. So what I should do? Say you can't take the registration number here in this. Okay, unnecessary extra field ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ login page we had taken the registration number from the user. When I was logging in, I had taken the registration number and password from the user. So you can see in the login function there is a registration number, but this registration number is in the login page. ನನಗೆ ಇದು registration page value ಬೇಕಾಗಿದೆ in the change password. How to access the data from login page
page login function to change password. Very simple. In such case, whenever you need to have a data from one function to another function, store these data inside a special variable called as session. Now this is very important in this case. On the session variable ante ಬರ್ತದೆ. That is request dot session. Use double quotations. Inside this, you give whatever the data you want. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಸರು ಕೊಡು. Equal to the registration number which I have taken from the user. So once I store this data inside the session dot register request dot session register number, this variable, that is the registration number, can be used by any function in the program. So one the function link, in one function is if you want to exchange the data, this is a method. You should not use the parameter passing technique in this case. Got this? So in such case, I have stored the data inside the session variable when I was logging in. So the same session variable can be used in the change password now. So change password ಹೋಗ್ತೀನಿ, and here I will say very simple, register number equal to fetch the data from the session variable. Now the same thing is used here. Register number is equal to register number, and password is equal to current password in this. Whatever the current password he has entered, I am checking whether that register number and password is same in the database or not. And soft delete 0. You more conditions ittu antandra, if all the three conditions are satisfied, very simple, I have to update the password. Password hang update ಮಾಡ್ತೀವಿ. Very simple, copy the same code. Dot update is a function. Inside the update, you tell password is equal to new password. Got this? So here whatever he has entered in the new password will be copied inside the password. So the password is modified. That's it. Give a message to the user. Password changed. So most of the code is very simple in this. I have fetched all the three data from the front end in this. Next, I am checking if new password and confirm new password are same or not. If it is not same, give an error message to the user. In the else part, fetch the session data. This is very important. Fetch the register number from the session variable. Login page again code bardidre, same code I am writing here. Okay, and then I am using the same code again, whatever I have given in if condition. Use a update function. In the update function, I am changing the password to new password. And then give a message to the user saying message password changed. Save the code. That's it. The work is over. Okay. Now let me log in. Now I'll just refresh. Say current password is okay. That is line number 14. The alignment issue, line number 14. I'll put this in one single line. So the alignment is done. We got the control break. Refresh the page. Now when I enter the current password, say first let me enter the current password in this. That is Kiran. New password 123. New password. Confirm new password 123. When I click on change password, it will give an error in this case. This error is very important. Error note for it. Whenever you get a message saying key error, it always means there is a problem with the session variable. And you can see if you scroll down, it is showing that the line number 13 has a problem. Line number 13 is a session variable in this case. What is the problem here? The problem is you people are trying to fetch the session value. You are trying to fetch the data from the session variable, but point ಏನಂತಂದ್ರೆ the session variable itself is not initialized. Why it is not initialized? It is always initialized in the login page. But after I wrote this code, I did not execute the login page. So the data in the session variable was not saved. The data is not saved, hence you cannot fetch the data. So it is compulsory that you should perform the login operation again. ಯಾವಾಗ ನೀವು login operation perform ಮಾಡ್ತೀರಿ, now the session variable will be stored in this case.
So click on login. Now the session variable is stored. Understood this point? Click on change password. Now let us enter the current password, correct current password, that is Kiran. New password 123. Retype new password. I have entered some wrong password because I need to check new password and confirm new password if they are not same. Will it give any error? So click on change password. It shows an error. New password and confirm new password must match. Let me enter a wrong password now. The new password and confirm new password are correct. Okay. So should I change? Should I be allowed to change the password? Obviously no, because current password is very important. It should match in this case. So I click on this. It will show me a message saying it is not supposed to do that. Register filter number, registration number, registrations. We have not. We have given any message. We have forgotten to put in the else part. In the else part, I will say message is equal to uh, invalid current password. That means what happens here is he will check this condition. That is register number should be whatever I have stored in the session number session and current password is Kiran in this case. If the condition fail aitu andra, he will immediately come to the else part. He will display me a message saying invalid current password. So now let us do that. Say password, I will enter some wrong password in this. New password is 123, confirm new password is 123. I click on change password, it says invalid current password. Got this? Now let us execute it correctly. That is, I'll enter a correct valid password. Confirm new password is new password 123. Confirm new password 123. Everything is correct now. Click on change password. It says password changed. Understood this point? So you have to check two conditions in this. First condition where new password and confirm new password must be same. If it is not same, give a message. Second condition is check whether the register number and the current password is same or not. Register number 100% same ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ register number we have taken in the login page itself. So this will be always true. But this condition may fail. So I am checking that condition. Agar condition satisfy hua, update the password, give a message to the user. Agar this condition gets failed, come to the else part, give a message saying invalid current password. But this point, the most important thing you have to remember is how to store the session variable in this case. So this change we have to make it in the login function where we have to store the register number of the user in the session variable. Understood this point? Any doubt in this? No doubt? You can write down this first. Work is the one important operation that is generally used in all the applications, that is a file upload operation. वहाँ पे you may have to upload a image, you have to upload a word file, document file, video file, audio file, कुछ भी the file operation. Without the file upload operation, there is no project in this case. Okay, of course, it might not be in your project, that depends in this. But still, live project में कौन सा भी real time projects कौन सा भी ले लो, be it Gmail, be it Facebook, be it Instagram, everywhere we have a upload operation in this case. So that plays a very important role. So even for that, we have to focus on that. File upload operation के लिए there are some basic setups that we have to do in this. The first change is in the student register page. That is, whenever the student registers, I want to upload his photo in this. So photo upload करना है तो there are two changes that you have to do in the student home. The first change, you have to add an option input type equal to file so that he can upload the file in this. तो मैं क्या करता हूँ, after the option of course, I will just copy the existing code and paste it. That is the first change that you have to do. बहुत changes थोड़ा है यहाँ पे. So here I'll put it as student photo. Second, input type is equal to file. Name is equal to, I'll give it student photo. Okay.
Next, placeholder is not applicable. Max length is not applicable. So this is the first change in this case. So you can see the register page now. Post colon 8000 slash register student. Yeah, student register. Yes. STUDENTREGSTER. So I get a register page with upload file option in this case. Okay. Second thing, the most important change that you have to do when you are uploading a file, कौन सा भी form tag में, if you are making use of input type is equal to file, you have to add one attribute in the form tag in this case. तो form tag में एक और एक attribute add करना है, that is enc type. enc type is equal to multi-part slash form hyphen data. सर ये क्या है? Whenever you are using the image file and the text data, दो अलग अलग type of data combination, that is in the register page, till now we had only text data in this. लेकिन अभी क्या हो रहा है, text data और image दो अलग अलग type of data है. So when two different types of data are retrieved, वहाँ पे we are mentioning it as multi-part. That means दो pieces में इसको encrypt करना है. When the data is being sent on the server, it has to be encrypted in two different formats. One is for the text data and for the video data in this case, or whatever the file that you have uploaded in this. So that is what we are telling him. Encryption type is equal to multi-part, मतलब दो अलग अलग parts में encrypt करना है for the form data. Form data मतलब all the data in this case. So for that, you have to tell the browser to perform this type of an encryption. So these are the two changes that we have done in the student register. First thing. Second thing, whenever you are storing the data, जब इसका फाइल अपलोड करते हैं, तो फाइल अपलोड करने के बाद वो फाइल डेटाबेस के अंदर स्टोर होना, दैट इज models.py में we make the second change. That is in models.py student photo, स्टूडेंट फोटो बोल के एक वेरिएबल को डिक्लेयर करो जहां पे फाइल का नाम स्टोर होता है. Okay, so student photo is equal to models dot char field. Inside this, max underscore length is equal to 255 ही देना. You should not give less than this. Reason, Windows operating system में the file name maximum 5 characters will be 255. उससे ज़्यादा characters नहीं दे सकते. तो I am keeping it max length is equal to 255. उसके बाद कॉमा कंपल्सरी डिफॉल्ट इज इक्वल टू nopic डॉट png. सर वाई दिस डिफॉल्ट इन दिस केस? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास स्टूडेंट रजिस्टर डेटा में डेटा इज ऑलरेडी देयर. ओके, सो वो डेटा को कौन सा इमेज डिस्प्ले होना, बिकॉज करंटली वी हैव ऑलरेडी स्टोर्ड द डेटा इन दिस. तो व्हेन दिस कॉलम इज एडेड टू दोस डेटा, वहां पे डेटा खाली रहेगा. सो इंस्टेड ऑफ शोइंग एम्प्टी वैल्यूज, मैं क्या बोलता हूँ, उसको nopic डॉट png बोल के एक फाइल का नाम दे दो. और दिस पॉइंट, क्योंकि बाद में उनको फोटो नहीं है बोल के एक और एक इमेज डिस्प्ले करेंगे, दैट आई विल शो यू लेटर. So this is the third change, that is we added a new column inside the student register model in this case. Whenever you make any change in the models.py, immediately make migration or migrate execute. This is very important. Make migration and migrate. So that new column will be added to the model in this case. Okay, so let me list out all the changes in this case. Say first हमने क्या किया, we add input type equal to file in HTML page. That is the first change. Second change we did was add attribute enc type, enctype is equal to multipart multipart slash form hyphen data in form tag. This was a second change in this case. Third change we did was add a new column in models
in the uh, class model. Okay, and set max length is equal to 255, comma default is equal to nopic dot png. अगर नो सर यहाँ पे डिफॉल्ट एम्प्टी एरर कुछ भी नहीं डाला हुआ तो इट विल गिव एरर. ओके, सो वहां पे हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट इक्वल टू नो पिक बोल के डाले तो एटलीस्ट वन इमेज विल बी डिस्प्लेड देयर. So for that reason, I'm using the default is equal to nopic.png in this case. Okay. उसके बाद fourth in this, of course, you have made a changes in the models.py. Execute, make migrations, and migrate. ठीक है. Fourth step is clear. No doubt in this case. Now, fifth step in this. अभी तीन changes है. The first changes in the settings.py. आपका एप्लीकेशन के अंदर सेटिंग्स डॉट पी वाई के अंदर जाओ. यहाँ पे यू हैव टू राइट इंपोर्ट ओएस. इंपोर्ट ओएस बोल के एक बिल्ट इन लाइब्रेरी फाइल है, वो फाइल को एक्सेस इंपोर्ट करो. व्हाई इट इज यूज्ड विल सी दैट लेटर. स्क्रॉल डाउन. हम ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ सो स्क्रॉल डाउन. यहाँ पे एक स्टैटिक यूआरएल बोल के एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं. इसके नीचे यू कैन डिक्लेयर इट एनीवेयर. यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, आई विल टेल दैट लेटर इन दिस केस. यहाँ पे क्रिएट टू वेरिएबल्स इन दिस. ये सब वेरिएबल्स है, दीज आर बिल्ट इन वेरिएबल्स ऑफ सेटिंग्स डॉट पी वाई. तो यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट टू वेरिएबल्स, कॉल इट एज मीडिया हाइफन यूआरएल इज इक्वल टू मीडिया स्लैश. नाउ सर ये मीडिया क्यों देना, I am giving this media as a name of a folder where I want to upload my photos. नहीं तो you can give student photo. If you are storing only student photo inside this, you can give student photo only. Okay. Next. इसके बाद declare one more variable, media media underscore root. Okay. Media underscore root बोल के वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. यू कैन गिव एनी वेरिएबल नेम, बट दीज आर सम स्टैंडर्ड नेम्स दैट इज जनरली फॉलोड इन दिस केस. ओके, सो मीडिया अंडरस्कोर रूट बोल के एक वेरिएबल क्रिएट करो. ये स्टूडेंट फोटो का फोल्डर जो क्रिएट करते हैं हम, उसका पाथ यहाँ पे स्टोर करना. ओके, वी हैव टू स्टोर द पाथ ऑफ दैट पर्टिकुलर फोल्डर इन दिस. कैसे करते हैं, अंडरस्टैंड दिस. os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन. ओएस बोल के हमने ऊपर एक फाइल इंपोर्ट किया था, उसके अंदर एक फंक्शन आता है पाथ डॉट ज्वाइन. मतलब आई एम फेचिंग द डेटा द पाथ ऑफ दैट पर्टिकुलर फोल्डर इन दिस. कैसे, वेरी सिंपल. तो ज्वाइन फोल्डर के अंदर यू हैव टू पास टू पैरामीटर्स. द फर्स्ट पैरामीटर इज, एक यहाँ पे बिल्ट इन वेरिएबल रहता है, दैट इज बेस अंडरस्कोर dir. Base underscore dir always has the path of your project folder in this. आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर का जो पाथ है, इट इज ऑलवेज स्टोर्ड इनसाइड दिस पर्टिकुलर फोल्डर इन दिस. वो कैसे फेच कर रहा है, ही इज डूइंग दैट. ओके, सो लेट मी टेक दिस एंड उसको वहां पे पैरामीटर बोल के भेज दो. कॉमा डबल कोटेशन में सेम थिंग व्हाट यू हैड गिवन इन द स्टूडेंट फोल्डर. तो यहाँ पे क्या होता है, बेस अंडरस्कोर dir विल गिव मी द पाथ टिल दिस प्लेस. वो कौन सा भी ड्राइव में हो, वो ऑटोमेटिकली ड्राइव भी चेंज कर लेता है. सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, कौन सा ड्राइव है, वो ऑटोमेटिकली टेक द कंप्लीट पाथ इन दिस केस. इनसाइड हियर ही इज एक्सपेक्टिंग अ मीडिया फोल्डर इन दिस केस. मीडिया फोल्डर यानी द फोल्डर नेम व्हाट वी हैव गिवन हियर. और ये दोनों सेम होना चाहिए फोल्डर का नाम. सो आई विल टेक दिस, create a new folder here. What is, मतलब ये जगह पे पूरे फोटोज को स्टोर होना है. अंडरस्टूड दिस. सो settings.py में we made some changes in this case. तो क्या क्या चेंजेस किए, the first change that is import os in settings.py. That's the first thing in this.
एंड देन उसके बाद हम दो लाइंस ऐड करते हैं, ऐड द बिलो लाइंस इन settings dot p. Okay, वरना I'll keep it like this in settings dot py. ये काम करो. ओके, इंपोर्ट ओएस, क्योंकि मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्ट जो भी फोल्डर एक्सेस करना है, फाइल एक्सेस करना है, दोज आर लाइब्रेरी फाइल्स आर इन द ओएस. तो ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, दैट path of that particular folder is merged with the student folder which we have created in this. Understood this point? Any doubts in this case? इतना होने के बाद the sixth step in this case. Remember, these things are just one time. इसको एक बार वहां पे क्रिएट कर दिया तो हो गया. But when you are uploading a file, these are common things. Okay, these are only one time work in this case. और एक वन टाइम वर्क आता है in urls.py of application. एप्लीकेशन के अंदर urls.py में जाके वहां पे थोड़ा चेंजेस है. ओके, वहां पे add the following lines. क्या क्या लाइन्स ऐड करना है, से ओपन द go to the application folder in that urls.py. यहाँ पे you have to access two library files in this case. दो library files को हम यहाँ पे access करते हैं. First one from the Django dot conf conf import settings. सेटिंग्स बोल के हमारे पास एक बिल्ट इन क्लास है. वी सॉ जस्ट नाउ सेटिंग्स डॉट पी वाई इन दिस केस. वो सेटिंग्स डॉट पी वाई का जो भी पाथ है वो पाथ को हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं बिकॉज वी आर एक्सेसिंग दीज वेरिएबल्स. ये जो वेरिएबल हम डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे, वो वेरिएबल्स को हम सेटिंग्स डॉट पी वाई में यूज यूआरएल्स डॉट पी वाई में यूज करते हैं. सो इट इज लाइक इंपोर्टिंग अ बिल्ट इन लाइब्रेरी फाइल दैट इज सेटिंग्स डॉट पी वाई. ओके, this is the first statement in this. इसके बाद from django dot conf conf dot urls import static. static बोल के एक built in function आता है, वो function को हम access करते हैं यहाँ पे वो use करने के लिए. So these two lines have to be added in the urls.py. Let me add that. Okay, next. अभी यहाँ पे URL patterns के अंदर we have given the path. These paths are generally used to access the functions of the views.py. सर मेरे को फोल्डर भी एक्सेस करना है तो पाथ यहाँ पे देना पड़ता है कि वो पाथ कहाँ पे है बोल के. बट लिखने का मेथड इज डिफरेंट. यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर क्लोजिंग द urls.py URL patterns, here you mention URL patterns is equal to URL patterns plus. मतलब ये जो URL पैटर्न्स है इसको और एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने का है. तो व्हाट वी डू इज वी मेक यूज ऑफ ऐड इन दिस केस इक्वल टू स्टैटिक बोल के मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया था, वो फंक्शन को कॉल करो. इनसाइड दिस फंक्शन यू हैव टू राइट टू बिल्ट इन पाथ्स इन दिस. आपका स्टैटिक मीडिया अंडरस्कोर यूआरएल एंड मीडिया अंडरस्कोर रूट हैव टू बी फेच्ड इन दिस केस. वो जो दो वेरिएबल्स हम यहाँ पे यूज किए थे वो दोनों वेरिएबल्स को एक्सेस करना है. एक्सेस करना है तो वेरी सिंपल इन दिस केस. यहाँ पे इट इज सेटिंग्स डॉट मीडिया यूआरएल कॉमा डॉक्यूमेंट CUMENT डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू settings dot media. So you have to give two parameters to him. Settings का जो media URL है वो URL पास करना है and second document बोल के एक field ऐड करके you have to give settings dot media root. मतलब you are accessing those variables and you are giving the path here in this case. Okay, so this one more line इसको थोड़ा छोटा करना है तो you can use a plus operator. इसको remove करो.
You are using a shorthand assignment operator in this. Whenever you have like a is equal to a plus b है, तो हम क्या करते हैं, इसको और एक तरीके से लिखना बोले तो a plus equal to b बोल के लिख सकते हैं. Okay, I am using the same method to have this. अभी इसको कॉपी कर दो, copy this, and this is a one more step. So URLs dot pattern में ये fixed path है. These are all fixed values that you have to give in this case. Clear till here, everyone? Write down till here. To add, write down. तो यहाँ पे so we import एक file system storage बोल के there is one built-in class in Python language in this case. So that class is mainly used to access the data. मतलब whenever we want to perform any operations in this, वो operations मतलब file upload operation जो रहता है, वो file upload operation के लिए we make use of that built-in class called as file system storage. तो वो फाइल सिस्टम स्टोरेज को फर्स्ट वी हैव टू एक्सेस इट फ्रॉम द बिल्ट इन लाइब्रेरी फाइल इन दिस. तो वो लाइब्रेरी फाइल है django डॉट कोर डॉट और एक क्लास का नाम आता है, आई डोंट रिमेम्बर इट इन दिस, उसको बाद में देखेंगे. उसके बाद वी हैव इंपोर्ट ए बिल्ट इन फाइल नेम फाइल सिस्टम SYSTEM storage. So file system storage has the built-in class which is used to upload the files in our specified folder. हम जहाँ पे भी उसको अपलोड करना चाहते हैं वो अपलोड करना है बोले तो we make use of this particular class in this. Okay. From django.core.files.storage. Till then you write down this. We'll just check with that. So just go with some existing projects. It is core.files.storage. Okay. Just take that. So files का storage is a one more class of this. Okay. तो उसके पास एक built-in class है file system storage. So this file has to be imported first. Okay. तो इसको point में add कर देंगे. That is so we import this built-in class. ये built-in class होने के बाद the most important thing in this हमारा student register page को जाओ. That is def student register. जैसे हम यहाँ पे we are fetching the text data from the user. Okay. उसी तरह हमारे को फाइल को भी एक्सेस करना है. We have to fetch the file from the HTML page in this case and उसको स्टोर करना है inside the student photo. लेकिन स्टूडेंट फोटो को बाद में करेंगे. फर्स्ट लेट मी एक्सेस दैट डेटा इन दिस केस. तो डेटा एक्सेस करने के लिए आई विल से student फोटो इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट whenever we are accessing the we are fetching the text data. हम क्या करते थे, we used to make use of post बोल के. लेकिन जब आप एक फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं इट इज फाइल. Okay, file in capital letters, file dot get. Okay, so remember text data है it is always post. अगर input type file से retrieve कर रहे हैं we make use of a built-in class called as file. Dot get के अंदर fetch the name of the HTML tag. So whatever the tag name we have given here, that is student photo, copy करके paste करो. Okay. अगर कंपलसरी है तो ठीक है, कंपलसरी नहीं है तो यू कैन पुट डबल कोटेशन ओपन क्लोज. ओके, ऑफ कोर्स इन माय केस इट इज कंपलसरी, सो उसको अपलोड करना ही है. सो आई विल रिमूव दिस पार्ट. सो व्हाटएवर द फोटो ही हैज अपलोडेड दैट इज स्टोर्ड इनसाइड दिस स्टूडेंट फोटो इन दिस. उसके बाद द नेक्स्ट वन
जो हम फाइल सिस्टम स्टोरेज का इंपोर्ट किए थे उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज typing is always copy paste is always best is equal to file system storage. Okay, so I'm creating the object of this particular class. क्रिएट करके मेरे को यहाँ पे दो काम करना है. द फर्स्ट थिंग इज आई हैव टू स्टोर द फाइल इनसाइड द डेटाबेस. Sorry, store the file in the student photo folder in this case. और दूसरा काम है I have to fetch the name of that file whichever I have uploaded and store it inside the models.py. So two works in this case. So first हम क्या करेंगे, we will first upload the file inside the database. तो फाइल को अपलोड डेटाबेस के अंदर अपलोड करना है. So for that we have a option that is very simple. fs का सिस्टम स्टोरेज फाइल ऑब्जेक्ट हो गया. देन वी हैव एक वेरिएबल का नाम फोटो is equal to fs dot save. So save is a built-in function in Python language in the file system storage, which is used to save the file in the media folder. तो आपका स्टूडेंट फोटो जो फोल्डर है वो फोल्डर के अंदर स्टोर करने के लिए we make use of fs dot save and उसके अंदर you have to give the complete photo in this case. तो हम जो फोटो फेच किए थे यूजिंग द रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट गेट, उसको वॉट एवर द फाइल नेम यू हैव गिवन उसको कॉपी करो. डॉट फाइल नेम मतलब वो फाइल का नाम वहां पे सेट करना है. आफ्टर दैट यू पुट द स्टूडेंट फोटो. तो दो पैरामीटर दिया जाता है. द फर्स्ट पैरामीटर इज द नेम ऑफ द फाइल. वो नेम ऑफ द फाइल कैसे फेच करना, द वेरिएबल नेम डॉट फाइल नेम विल गिव यू द नेम ऑफ द फाइल इन दिस केस. सेकेंड पैरामीटर वो इमेज जो है वो इमेज को हम क्या करते हैं, वी पुट इट इनसाइड द सेव फंक्शन. दीज टू पैरामीटर्स आर गिवन टू द सेव फंक्शन. इतना होने के बाद द फाइल गेट्स सेव्ड इनसाइड द फोल्डर दैट यू हैव क्रिएटेड इन दिस. सर वो फोल्डर का नाम कैसे पता चलता है, दैट इज व्हाट द फाइल सिस्टम स्टोरेज ऑलवेज डज. तो फाइल सिस्टम स्टोरेज में हम जो भी फाइल फोल्डर का नाम दिए सो रहता है वही जगह पे ही विल गो टू द urls.py, he will fetch the name of the folder in this case and वो folder के अंदर डेटा को स्टोर करता है. ओके, आफ्टर दिस लास्ट स्टेप इन दिस, सर हमारे को फोटो शुड बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस. तो हम क्या करते हैं, वेरी सिंपल, गो टू srd dot the name of the variable that is student photo equal to fs dot urls. इसके अंदर we give photo. So fs dot urls में क्या होता है, whatever the photo you have uploaded, whatever the name of that photo is there, that will be stored inside the student photo. मतलब वो हमारे स्टूडेंट फोटो के अंदर the data will be stored in this case. So this line will store the name of the file, saves name of file in models. ये लाइन पे saves file in the folder. तो यहाँ पे पहले फोटो स्टोर होता है, उसके बाद उसका नाम हम क्या करते हैं, we store it inside the models.py. So these are the steps that should be followed when you are performing a file upload operation in this case. थोड़ा lengthy है, but yes, you don't have a choice. Okay, so we will add those steps. तो फर्स्ट फाइल इंपोर्ट कर दिए. I will just copy paste these codes. उसके बाद 4 lines. In save code definition, I have to write this. यहाँ पे actually general दे रहा हूँ, that is the tag name. Whatever the tag name you have given, you use that. यहाँ पे do you want me to give the specific value or general format? Specific. In that case,
We have used student photo बोल के use किया. So I'll keep it as it is. इतना काम करे तो the photo gets uploaded. यहाँ पे कुछ Django का वो मिस हो गया. That is in urls.py. So in urls.py django use.py को save. Save this. Now let us run the application. Refresh. Hope so no errors. The error said yes. Right module object is not callable. इसको तो change किए थे. URLs.py. Okay, we forgot to change it here. Underscore root एक डालना और यहाँ पे dot static. I had written that. Forgot to mention it here. So refresh करो. Now let us upload or a record in this. Say नाम names अजय राहुल हो गया. क्या नाम होगा? MOIZ. Trace number SG 24 MCA 015. तो 015 को शायद 12 डिजिट दिए थे शायद कुछ ऐसा किए. सो should be like this. कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक जीरो ऐड कर देंगे और have a given proper. We have given like that only. Next mobile number 9876543216 दे देता हूँ. Email ID moiz@gmail.com. Password moiz. Course MCA. फोटो अपलोड करता हूँ जो यहाँ पे नहीं है मेरे पास. I'll take any one photo in this. Click on register and it will give error saying files. Probably I've made a mistake there. It should not be file, it should be files. Attribute name, file name, name, file name. Student photo was correct. बस तो नहीं होगा. Something is missing. So just cross check. Storage. Got self name, not the. It's only name, not the file name. तो बाद में इसमें भी चेंज करना है. That is यहाँ पे changes files and यहाँ पे changes name. और क्या होगा? File system object has no attribute URLs. Press dot URLs. Press dot URL नहीं आता है. शायद headache है तो you can see the headache part. Press dot save हो गया. उसके बाद fetch the URLs. URL. Okay. We have made it URLs बोल के दिए हैं. It is URL. So one more mistake. Hope so it's a last. Yes, it is last. Okay. So वो एक change कर देंगे in our code. That is instead of URL मेरे नेक्स्ट. सर अभी कैसे भरोसा करूं कि फाइल अपलोड हुआ है, इतने सारे एरर्स आए. द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज चेक इट इन द स्टूडेंट फोटो. यहाँ पे फोटो है कि नहीं. द फोटो इज देयर. वो दो बार एक्चुअली
फाइल सेव हुआ है, दो बार क्यों दिखा रहा है, मतलब वी हैव रिफ्रेश्ड इट टू टाइम्स. ओके, सो फाइल तो सेव हुआ है. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट इन दिस. सेकंड पॉइंट, सर हाउ कैन आई सी दैट फोटो इन दिस? तो फोटो दिखाना है बोले तो वेरी सिंपल, गो टू रजिस्टर सर्च स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे को वो फोटो दिखना. ओके, सो उसके लिए वेरी सिंपल, दिस इज स्टूडेंट सर्च. I will go to student template, student search. Student search में से very simple add one more th. से starting में डाल सकते हो, end में डाल सकते हो. Prefer it in starting position in this. और serial number के बाद I want photo in this. यहाँ पे very simple एक variable copy paste करना है. That is student ओके. स्टूडेंट फोटो बोल के डालोगे तो वो फाइल का नाम दिखेगा, lopic.png. ठीक है, आई डोंट वांट अ फाइल नेम, आई वांट द फोटो टू बी डिस्प्लेड. ओके, तो मोइस को सर्च करेंगे, MOIZ. सो उसका फोटो का पाथ दिखा रहा है. आई वांट द फोटो टू बी डिस्प्लेड देयर. फोटो डिस्प्ले करना है तो यू नो इट इज अ इमेज टैग. सो img src इज इक्वल टू द फुल फाइल का वैल्यू. ओके, एंड क्लोज द टैग. दैट्स इट. सेव करो, रिफ्रेश, तो वॉइस का फोटो चेहरा दिख रहा है. सर बहुत बड़ा हो गया. यू कैन रिड्यूस इट इन दिस, से यूजिंग द हाइट प्रॉपर्टी, मेक इट सम 100 px. एंड जब भी आप फोटो डालते हैं, इट शुड लुक गुड इन दिस केस. लुक गुड इन द सेंस वो शार्प एज नहीं रहना चाहिए. ओके, सो वी यूज अ स्टाइल प्रॉपर्टी. स्टाइल प्रॉपर्टी में बॉर्डर बॉर्डर रेडियस इज इक्वल टू 10 px. वो शार्प एज के बदले में कर्व एज आएगा, थोड़ा कर्व दिखेगा, इट लुक गुड. सर पूरा राउंड आना है हमारे को, यू इंक्रीज द वैल्यू. जैसे आप ये करोगे वो कर्व होते जाएगा. हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी सेट करके यू कैन एडजस्ट दैट. So this is how the files can be saved in the database. Got this point? पूरा 30 minutes का कोड है. रिमेंबर यहाँ पे द फॉर्मेट जो है, देर आर सम फिक्स्ड थिंग्स इन दिस केस. जैसे दीज टू आर फिक्स्ड, ये हमेशा फिक्स रहेगा. यू आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग इन दिस केस. एक बार करना है इसको. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज, इसी से स्टार्ट करेंगे. 1 2, these are only one time in this. 3 4 5 keeps changing. ये आपका हर एक वर्क के ऊपर इट कीप्स चेंजिंग इन दिस केस. क्लियर विद दिस? एक 2 3 साल तक प्रैक्टिस करो विदाउट एनी एरर्स, यू विल गेट. गॉट दिस? यस, बिकॉज